Hello everyone, welcome to the top 50 MCQs session on EduTap, in which we are going to cover the top 50 MCQs from the month of March 2023, and this is the part 1 for the month of March. So guys, in this session we are going to revise everything that we have covered in the past 1 week from the fast track sessions. And guys, as we all know that solving MCQs is one of the most important way in order to revise everything when I talk about the current affair. And in the today's session guys, we are going to cover the top 50 general awareness MCQs which are relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. So guys, before starting the session, there is an important announcement to all of you that we at EduTap are offering and providing you the comprehensive guidebooks which we have released for the aspirants of RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. So guys, when I talk about these particular guidebooks, so these are going to provide you the definitive answers to all your queries that pops up in your mind as an aspirant. It can be about the body, it can be about the exam, and it can be about the preparation. For example, when I talk about the Reserve Bank of India, so what is exactly the role that RBI plays in the Indian economy? When I talk about the exam, so what is the eligibility criteria? What is the detailed syllabus? When I talk about the preparation, so what are the different sources that you are required to follow in order to clear this exam? So guys, all the definitive answers to these queries will be provided in this particular comprehensive guidebook. So what are you waiting for? Kindly download these guidebooks from the link given in the description of this particular video. So now let's back to the session guys, and today we are going to cover the top 50 MCQs, and it's your duty as well to participate in the session by typing your answers in the comment section. And at the end of the session, you will be telling me that what exactly your score was out of 50 in this particular session. So let's see that आज का जो चैलेंज मैं आपके सामने देने वाला हूँ इन टॉप 50 MCQs का, तो कौन सबसे ज़्यादा स्कोर करता है इस सेशन के अंदर. So let's start the session with the very first question here on the screen. And the question is, Union Cabinet has recently given approval for the procurement of 70 HTT 40 basic trainer aircraft. See guys, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है प्रोक्योरमेंट इन एयरक्राफ्ट का फॉर द इंडियन एयरफोर्स, एंड आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये प्रोक्योरमेंट की जाएगी इंडियन एयरफोर्स के लिए. एंड गाइस, द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट इज गोइंग टू बी 6,828.36 करोड़. सो गाइस, हियर द ऑप्शंस आर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PEML, VDL, Hindustan Aeronautics Limited and the Tata Advanced Systems Limited. And here guys, the right answer to the question is option D, that is HAL, जिससे ये 6,828.36 करोड़ रुपीस के अंदर प्रोक्योर करने वाले हैं. Now the next question. So here guys, you are required to tell me the name of the organization which has commissioned India's first air cooled condenser. So guys, मैं आपको बता दूं कि कभी कोई चीज़ इंडिया के अंदर पहली बार होती है, so it really becomes the important part when I talk about the exam, because these kind of news articles attracts the attention of the examiner as well, and that's why the questions on the basis of these information are being asked in the exam. तो अगर यहाँ पे हम बात की जाए, so इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर को कमीशन किया गया है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पर किया गया है, दैट इज इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड. एंड किसने किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज NTPC. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, IIT गुवाहाटी, इन्होंने एक MOU साइन किया है विद द समग्र शिक्षा, दैट इज ऑफ असम, under the dash to develop scientific temper and strengthen students ability to handle the challenging environment. So basically अगर हम बात करते हैं इस particular MOU से जो IIT गुवाहाटी है, it is going to collaborate with the other higher secondary schools and they are going to mentor the students so that they can enhance their ability to handle the challenging environments. तो आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सा इनोवेशन, कौन सा वो प्रोग्राम है जिसके अंडर बेसिकली इन्होंने ये MOU साइन किया है. सो हेयर गाइज, सम ऑफ द ऑप्शंस आर एम, स्पार्क, देन राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, Shreyas, and none of the above. And here guys, the right answer is option C, that is Rashtriya Avishkar Abhiyan under the Ministry of Education. Now the next question. So Indian Navy INS Sumedha has participated in which of the following countries naval defense exhibition? See guys, recently एक naval defense exhibition और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीक के सेशन में बताया था, सो वहाँ पर इंडियन INS सुमेधा ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया. और आपको ये बताना है कि ये जो हमारे एग्जीबिशंस है ये कौन सी कंट्री इनको होस्ट कर रही है. एंड गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट दैट द कैपिटल ऑफ दैट कंट्री इज अबू धाबी, एंड एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज UAE. Now the next question. So here guys, you are required to tell me the name of the bank जिसने IRCTC के साथ मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग
co-branded travel credit card. It is one of the typical banking awareness question, guys. And here when I talk about the right answer, it is option A, that is HDFC Bank. Now the next question. Godrej and Boyce, the flagship company of the Godrej Group, has announced that its business Godrej Tooling has partnered with Dash. See guys, whenever there is a news of partnership, MOU, तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. पहली चीज़ है नेम ऑफ द पार्टी जिसके बीच में ये MOU साइन हुआ है, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट what exactly is the aim. तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये पार्टनरशिप हुई है so that they are going to collaborate on the machinery and plant projects, and these projects will be related to the railways and the metro rail. So guys, when I talk about that what exactly is the right answer to this question, it is option B, that is Renmark India Private Limited. See guys, ये questions काफ़ी direct हैं, that's why I'm telling you that मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है. एंड गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस सेशन इज द रैपिड सेशन. सो गाइस, रैपिड फायर सेशन है, तो इसके लिए आपको मुझे जल्दी जल्दी अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी होगी टू टेल मी द राइट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. Now the next question, guys. So here you are required to tell me the name of the bank which has completed the acquisition of Citibank India's consumer banking, and the amount of that particular acquisition is 11,603 crore. So guys, हम काफ़ी लंबे टाइम से सुन रहे थे कि जो सिटी बैंक का जो इंडिया कंज्यूमर बैंकिंग है, ठीक है, जितना भी कंज्यूमर बेस है सिटी बैंक का फॉर इट्स बिजनेस, इसको एक्वायर करने वाला है वन ऑफ द बैंक. इसके सारे ऑपरेशंस को एक बैंक एक्वायर करने वाला है, एंड द क्वेश्चन इज ऑन दैट बैंक ओनली. एंड गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट दैट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन द मुंबई, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज एक्सिस बैंक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नासा एंड स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है क्रू 6 विद द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट to move to the international space station, that name is Sultan Al Nayadi. And guys, when I talk about the country from which he belongs to, basically that is what the question is all about, and once again the right answer is option B, that is United Arab Emirates is the right answer. Now the next question. So you are required to tell me the name of the company which will be setting up an AMC, that is asset management company and the trustee company. जो कि ये जो कंपनीज हैं ना, इनकी जो सेटिंग है, ये जो सेटअप की जाएंगी, सो दे विल बी सेटअप इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल सेबी रेगुलेशंस, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988. सी गाइस, जब भी आप कोई ऐसी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम न्यूज़ के अंदर देखते हैं, तो उनके बारे में और डिटेल्स आपको जानना बेहद ज़रूरी है. For example, when I talk about SEBI, it was established in 1988. It is headquartered in Mumbai. And when I talk about the chairman of SEBI, it is Madhavi Puri. So इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को आपको भी अपने एंड से सीक आउट करना होगा और उन्हें नोट डाउन करना होगा अपने पास, ठीक है. So guys, when I talk about the right answer to this question, it is option A and B, that is Angel One and Bajaj Finserv. Now the next question. So here you are required to tell me the name of the state which has basically collaborated with the UNEP. And guys, what is exactly the reason of collaboration? That is to facilitate addressing the rapidly increasing demand for cooling in cities. तो यहाँ पर ये जो डिमांड है इसको पूरा करने के लिए कोलैबोरेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन नायरोबी कीनिया. एंड जब हम बात करते हैं कि उस इंडियन स्टेट की जिसने कि यहाँ पर कोलैबोरेट किया है यूएनईपी के साथ, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु. और अगर हम बात करें यूएनईपी की, तो एज आई टोल्ड यू द हेडक्वार्टर इज इन नायरोबी कीनिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है इंगर एंडरसन. सो दैट इज राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से. तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विच इज बेसिकली सेलिब्रेटेड to basically celebrate the birth anniversary of CITES, which is one of the convention. I will be telling you about that as well. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 50th उसकी एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है. एंड गाइज, व्हेन आई टॉक अबाउट द डे ऑन विच इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज 3rd March, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो हियर गाइज यू कैन सी दैट this particular date was chosen as the birthday of CITES, that is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which was signed in 1973. ठीक है. And guys, this particular year marks the 50th anniversary of the adoption of CITES. That is what the important information is. And when I talk about the important days, तो यहाँ पर दो चीज़ें important है. First one is the date. And the second thing is the theme for that particular day. So अगर theme की हम बात करते हैं तो theme for this year is partnership for wildlife conservation.
Now guys, let's move on to the next question. And here guys, you are required to tell me one of the name of the institution which has signed a $1 billion program to support India's health sector for the pandemic preparedness and enhanced health service delivery. ठीक है जी, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि what is exactly the name of that particular organization which has signed this $1 billion loan program. So guys, let me tell you here that this particular organization has signed two complementary $500 million program which has combinedly become the $1 billion program. And when I talk about that particular organization, its name is World Bank. So अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में भी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है. तो अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंटली डेविड मेलपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर जाननी होगी, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द पास्ट सेशन एज वेल that recently president of US, that is Joe Biden, has nominated Ajay Banga, जी हाँ, Ajay Banga as the president for the World Bank Group. And that is what you are also required to remember from the exam point of view. Now the next question. So India has been ranked dash in the electoral democracy index. See guys, electoral democracy index निकाला है डेमोक्रेसी ने, दैट इज वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जिसका नाम है. दिस इज द स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट, और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें इन्होंने बताया है. एंड गाइज, व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडिया वाज आल्सो स्टेटेड टू बी अमंग द टॉप 10 ऑटोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की रैंक की, तो इंडिया वाज रैंक्ड 108 इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट द राइट आंसर इज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक्सटेंड किया है MOU विद द NIFT for the design support of products made by self-help groups. A non-financial MOU was signed between the NRLM and NIFT in dash year, initially for 3 years. See guys, earlier this particular MOU was signed for 3 years, and now once again they have basically extended this MOU. अगर हम बात करते हैं कि ये इनिशियली 3 years के लिए हुआ था, तो इस कौन से ईयर के अंदर बेसिकली साइन हुआ था, द क्वेश्चन इज अबाउट दैट, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 2019. सो गाइस, अगर हम बात करते हैं NRLM की, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, विच वाज लॉन्च्ड इन, सो बेसिकली इट वाज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इट वाज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन से ईयर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, next question आपकी स्क्रीन पर, that is the researchers in a new study have confirmed the existence of 5th new layer of earth. So guys, here the 5th layer is made of dash the same materials that comprises the rest of the inner core. So you are required to basically identify the name of the elements with which this particular 5th layer is made up of. Is it copper, aluminium, sulfur, both A and B, and none of the above? See guys, let me give you the important point here, that in the exam you will find this particular option as well in the options, but please make sure that always this is not the point that you are going to find out the answer among these 4 options. The none of the above can also be the answer, and this is one of that instance as well. As the right answer to this question is option E, that is none of the above, because when I talk about the elements with which the 5th layer is made up of, it is iron and nickel. That is the right answer to this question. Now the next question. So guys, recently IPS officer Rashmi Shukla has been appointed as the Director General of which of the following armed forces. तो ये recent appointment से न्यूज़ है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वो आर्म्ड फोर्सेज हैं जिसकी ये डायरेक्टर जनरल बनी हैं. एंड गाइस, ऐसी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, दैट्स व्हाई यू आर रियली रिक्वायर्ड टू कवर देम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सहस्त्र सीमा बल, दैट इज ऑप्शन सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोला टिनुबू has won the Nigeria's presidential election. See guys, recently नाइजीरिया के अंदर presidential election हुए हैं, और वहाँ पर जो विनर रहे हैं that is the बोला टिनुबू. बट गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये नहीं है. सी कैसे करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं और स्टैटिक पार्ट पर क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको यहाँ से जानना होगा. जैसे कि नाइजीरिया के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए. सो क्वेश्चन इज नॉट बेसिकली ऑन द person who has won the election. The question is basically on the capital of Nigeria, and when I talk about the right answer, it is option A, that is Abuja. And guys, इस तरीके से आपको भी प्रिपेयर करना होगा एग्जाम के लिए कि जैसा भी आप ऐसी कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखते हैं, उनको न्यूज़ के अंदर देखते हैं, तो उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जानना बेहद ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Shashidhar Jagdishan, who is the MD and CEO of one of the banks, he was chosen as the Business Standard Banker of the year 2022. See guys, this is a very direct question. The right answer is option D, that is HDFC Bank. Now the next question. So you are required to tell me the name of the bank which has completed the first non-dollar transaction with the Sri Lanka. तो guys यहाँ पर दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले उस बैंक का नाम जिसने कि इस पहली नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन को किया है और कौन सी कंट्री के साथ किया है, दैट इज श्रीलंका. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, सो दैट बैंक इज बेसिकली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच हैज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन विद द श्रीलंका. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन है गाइज वन ऑफ द सर्वेस के ऊपर. तो आरबीआई ने यहाँ पर इस सर्वे को निकाला है, दैट इज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस सर्वे को conduct किया है, that is Reserve Bank of India. Now the second important point is that what is exactly the aim? The aim is to capture the subjective assessment on the price movements and inflation. But guys, question यहाँ पर काफ़ी off the track है. The question is basically that in how many cities that this particular survey basically ये जो data है जो हमने लिया है in order to get the results, कितनी cities के अंदर basically इसको लिया गया था. That is what the question is all about, and the right answer is option A, that is 19 cities. Now the next question. So अगला question है from one of the reports, and guys whenever there is a report in the question we always tell you to cover some important dimensions, and these are the most important dimensions that is releasing body about that report, then the important rankings, important findings and the recommendations. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिपोर्ट का नाम mentioned है, that is more than a billion reasons the urgent need to build universal social protection. और क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बेसिकली इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है. on a very easier lines this question is all about, and guys the right answer is both UNICEF and International Labour Organization. So guys ILO की बात करें, it was established in 1919 and इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. And when I talk about the Director General of ILO, it is Dr. Gilbert Ongbo. Now guys let's move on to the next question. So here you are required to tell me the name of the organization जिसने की नीति आयोग के साथ मिलकर होस्ट किया है लाइफ-a-थॉन. तो गाइज लाइफ-a-थॉन एक तरीके की हाइब्रिड हैकाथॉन है, और अगर हम बात करते हैं ये बेसिकली थी मिशन लाइफ के ऊपर. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसको अपने सेशन के अंदर काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने कि मिलकर नीति आयोग के साथ होस्ट किया है लाइफ-a-थॉन. और यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो गाइज यहाँ पर इसके एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, ही इज Ashim Steiner is basically the present administrator of UNDP. Now the next question. So guys, अगले question है on the NADA. So NADA, that is National Anti-Doping Agency. It has signed an MOU to strengthen value-based sports education among the school children and teachers. So value-based sports education provide की जा सके to the school children and the teachers. This MOU has been signed and you are required to tell me कि इसमें से कौन सी organization के साथ MOU sign किया गया है NADA ने. And guys, it is basically NCRT with which this MOU has been signed. Next question. So Union Minister of Power ने लॉन्च किया है साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क. तो साडू इसकी एक्रोनिम, जब भी ऐसा कोई एक्रोनिम न्यूज़ के अंदर देखते हैं तो उसको अच्छे से आप याद रखिए उसका फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम के अंदर उस पर क्वेश्चन आ सकता है. सो गाइज यहाँ पर आपको मुझे बताना है दैट दिस साडून, दैट इज द साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क, ये जॉइंट इनिशिएटिव है. इसमें से कौन सी एंटिटीज का? इज इट US8, PFC, Power Grid Corporation of India Limited, both A and B, or only A and C? So guys, here the right answer is option D, that is both A and B, that is US8 and PFC, that is Power Finance Corporation. Now the next question. India with the CSIR and the sister organizations is going to provide tangible results in the three priority areas. That is of the water, lithium and vaccines. And guys, these three areas are being flagged by which of the following countries? So that is basically the question is it Indonesia, South Africa, Brazil, Serbia and Mexico? And let me give you a small hint that the right answer, the name of that country is basically the country which is having the currency as Mexican peso, and the right answer is Mexico, option E. Absolutely right. Now let's move on to the next question. So अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023. दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो यहाँ पर किसने ऑर्गेनाइज किया था? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. सो द एम वाज टू ऑनर द डैश ऑफ रूरल वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर.
तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किसको ऑनर किया है ड्यूरिंग द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023. So guys, let me tell you here that on the 8th of March 2023 we have across the world celebrated the International Women's Day. And when I talk about the right answer to this question as well, it is option C, that is they have basically recognized and honor the women champions. That is what the right answer is. Now let's move on to the next question. So Union Minister of Ports, Shipping and Waterways have inaugurated the first B2B Global Conference and Expo on the traditional medicine under the Shanghai Cooperation Organization, and you are required to tell me the name of the place where this particular conference, the first B2B Global Conference and Expo, was held. And here guys, it is basically in Guwahati, Assam. Now the next question. So guys, next question is very important. Here you can see that world's first 200-meter long डैश क्रैश बैरियर हैज़ बिन इंस्टॉल्ड. तो ये जो क्रैश बैरियर है कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है? इट इज इंस्टॉल्ड इन महाराष्ट्र, in Vidarbha, Maharashtra, and you are required to tell me that basically what exactly this crash barrier is all about. It is a alloy, plastic, laminated glass, carbon fiber and bamboo. So guys, आप सभी यहाँ पर alloy या फिर प्लास्टिक के बारे में सोच रहे होंगे, but the right answer is option E, that is bamboo. Now the next question. So guys, अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, and here you can see that Department of Social Justice and Empowerment उन्होंने एक MOU साइन किया है with the प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू. और इनका जो एमओयू का जो एक एम है, दैट इज बेसिकली टू स्प्रेड अ मैसेज. तो एक मैसेज यहाँ पर ही स्प्रेड करना चाहते हैं अमंग द यूथ, वुमेन एंड स्टूडेंट्स, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली दैट मैसेज इज which they are basically aiming to spread it with the help of this MOU. And here guys, it is basically Nasha Mukt Bharat Abhiyan, that is option A is the right answer. सो अगर हम बात करते हैं इस अभियान की, सो गाइस दे अभियान जो इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर गाइस यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप विच हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज. नाम है उस एक्सरसाइज का कटलास एक्सप्रेस 2023. और इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, इट वॉज बेसिकली कंडक्टेड इन द गल्फ रीजन. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, किसी आपको एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए, कहाँ पर हुई ये पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. तो ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से कौन सा जो नेवल शिप था जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है. दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर. सो हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज INS Srikhand. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन मेंबर्स have agreed on a legally binding ocean treaty. So guys, ये जो ocean treaty sign हुई है recently by the United Nations members, the name of that treaty is High Seas Treaty. And guys, it is very very important from the exam point of view. It is related to the sustainable development and environmental issues topic of the एग्जाम. तो अगर हम बात करते हैं हाई सीज ट्रीटी की, तो यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉइंग दिस ट्रीटी इज गोइंग टू employ more and more money to the marine conservation. That is why this treaty has been launched, and as per this treaty guys, they are going to basically make and convert world ocean into a protected area. तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कितना परसेंट ये वर्ल्ड ओशन का प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर इस लीगल फ्रेमवर्क के अंडर करने वाले हैं. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 30%. Now the next question. The question is from the Women, Business and the Law 2023 report, and you are required to tell me the organization name with which the organization which has released this particular report. So here guys, the right answer is option E, that is none of the above, as this particular report has been released by World Bank. तो यहाँ पर कुछ important findings है जो यहाँ पर mentioned है. For example, on average women enjoy only 77%. See guys, जो legal rights men को मिलते हैं उसका से 77% ही women's को मिल रहे हैं. और 2.4 बिलियन women ऐसी हैं जो कि ऐसी economies के अंदर रहती हैं जो उनको वो same rights provide नहीं करती which are basically provided to the men. So this is basically the key finding from this particular report. Now the next question. So guys, BBC ने recently honor किया है BBC Indian Sportswoman of the Year 2022 award. किसको किया गया है? That is a question from the awards, and you are really required to remember that what exactly it is all about. So guys, अगर हम बात करते हैं BBC Indian Sportswoman of the Year 2022 award की, it has been given to the मीराबाई चानू. That is the right answer, option C. Now the next question. So guys, Indian Navy ने recently successfully test fire की है अरेबियन सी के अंदर
BrahMos supersonic missile and the question is on the top speed of the BrahMos supersonic missile. तो अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पर 2019 और 2021 के अंदर BrahMos के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है and that is why you are required to basically tell me that what is exactly the top speed of the BrahMos supersonic missile as it is in the news recently. So guys, here the right answer to the question is option A, that is 2.8 Mach. Now the next question. So Indian Air Force ने recently receive किया है 3rd regiment of the S-400 Triumph Air Defense System. तो ये जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ के अंदर था और काफ़ी सालों से ये न्यूज़ के अंदर है. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से इंडिया ने इस ट्रियम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बेसिकली रिसीव किया है. एंड हियर गाइस इट इज़ अ वेरी नोन कंट्री जो कि लास्ट 1 ईयर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रही है एंड द नेम ऑफ दैट कंट्री इज रशिया. दैट इज ऑप्शन ई. Now the next question. So guys, noted dancer Kanak Rele who gave the academic status to Dash has passed away. See guys, इन्होंने इनमें से एक कोड यहाँ पर academic status provide किया था and you are required to identify that name only in this particular question. And here you can see the right answer is option B, that is Mohiniyattam. That is the right answer to this question. Now the next question. So Indian Navy has received the first time a fully indigenized fuse for underwater anti-submarine warfare rocket, that is RGB-60, which is used from the major warships. एंड आपको ये बताना है कि कौन से मैन्युफैक्चरर से यहाँ पर उन्होंने इसको रिसीव किया है. इज इट बेल, EEL, BDL, Cochin Shipyard Limited, or the Reliance Naval and Engineering Limited? And guys, when I talk about the right answer, it is option B, that is Economic Explosives Limited. Now the next question. So यहाँ पर guys 2023 का Pritzker Prize award यहाँ पर announce हो चुका है and you are always required to remember that what exactly was the name of the winner and from which country he belongs to. अगर हम बात करते हैं Pritzker Prize की, so it is one of the prestigious awards which is being provided and given to the architect. So when I talk about the right answer guys, it is basically option D for David Chipperfield, who is a British architect who has won this particular award. Now let's move on to the next question. So guys, Union Home Ministry has cleared a proposal for signing of the MOU between India's Narcotic Control Bureau. See guys, इंडिया के NCB ने एक यहाँ पर एक कंट्री के ही इसी तरीके की जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, दैट इज़ नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इसके साथ मिलकर एक प्रपोजल को क्लियर किया है और आपको ये बताना है कि ये जो एजेंसी है ये कौन सी कंट्री की है. सो इज़ इट Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Ethiopia and Maldives? So guys, let me tell you the right answer. It is once again the country whose capital is Abuja, जिसके बारे में हमने पढ़ा था presidential election के. And here guys, the right answer is option C, that is Nigeria. Now the next question. So guys, अगला क्वेश्चन है endorsement know how guideline कौन सी एंटाइटी ने बेसिकली इनको रिलीज किया है. सी गाइस, एग्जाम के अंदर भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. जस्ट सी द कीवर्ड्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट एग्जैक्टली द थिंग हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंडोर्समेंट्स नो हाउ गाइडलाइन यहाँ पर किसने निकाली है. द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट देम. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम और मिनिस्ट्री का नाम प्रोवाइडेड है. सो अगर हम बात करते हैं एंडोर्समेंट्स नो हाउ की, सो इट हैज़ बीन रिलीज्ड बेसिकली फॉर द सेलिब्रिटीज हु एंडोर्सेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनीज. तो यहाँ पर उनके लिए ये है कि सो दैट दे कैन नॉट मिसलीड देयर ऑडियंसेस अबाउट दिस प्रोडक्ट्स. That is why these guidelines are being released. And here guys, it has been released by the Department of Consumer Affairs. Now the next question. India's top explorer oil and natural gas corp has signed an MOU with which of the following companies for exploration of deep water blocks? तो इसके लिए इन्होंने बेसिकली किसके साथ MOU साइन किया है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप वाटर ब्लॉक्स. And here guys, it is Total Energies. That is the right answer. Now the next question. So Conrad K. Sangma has been sworn in as the CM of which of the following states? So guys, recently elections हुए थे and जब भी ऐसे कोई इलेक्शन होते हैं जहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर. तो चीफ मिनिस्टर किसके बने हैं कॉनरेड के संगमा? सो लेट मी टेल यू दैट ही विल बी it will be his second term as a CM of that particular state and the name is ऑप्शन बी, दैट इज मेघालय. सो गाइस, नागालैंड के भी नए सीएम बने हैं, दैट इज नीफू रियो. ये भी आपको पता होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग वाज कंक्लूडेड इन हैदराबाद एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्रीज which have been announced as a new long-term co-chair for this global partnership for financial inclusion and 3 years के लिए basically इनकी announcement हुई है. And when I talk about these name of these countries, they are Italy and India. That is the right answer to this question. Now the next question. So guys, Ministry of Power ने mandate किया है new coal और lignite based thermal plants
to either set up a renewable energy capacity which is equivalent to at least dash percent of the thermal plant's capacity or procure that much supply of green energy under the रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। सी गाइस आप देख सकते हो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या किया गया है कि एक न्यूज़ आर्टिकल से डायरेक्टली बस फिल इन द ब्लैंक किया है, एक वैल्यू को यहाँ पर एमिट किया है और वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक लगाया, और इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्जाम्स के अंदर and that's why you must be prepared for that questions as well. And when I talk about the right answer, it is option A, that is 40%. Now the next question. So next question is on the joint military exercise, that is Fringex 2023, and you are required to tell me the name of the country जिसके साथ मिलकर इंडिया ने इसको कंडक्ट किया है in the Indian state of केरला। सो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 23, एंड द कंट्री विद विच इंडिया हैज कंडक्टेड दिस एक्सरसाइज, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्रांस। दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here guys, you are required to tell me the name of the person who has become the first Indian Air Force women officer to head combat unit. तो Indian Air Force officer जो कि यहाँ पर पहली बनी है टू हेड कॉम्बैट यूनिट, और आपको बताना है उनका नाम। सो गैस ऐसी जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है, यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दैट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एज वेल, एंड द राइट आंसर इज शालिजा धामी. Now guys, let's move on to the next question. So which of the following organizations has released the report that is undernourished and overlooked, a global nutrition crisis in the adolescent girls and women? So guys, यहाँ पर आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो काफ़ी इजीली कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसने कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया होगा, एंड एब्सोल्युटली इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ यूनिसेफ. सी गाइस काफ़ी आसान है, आप देख सकते हो गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, वुमेन के बारे में बात हो रही है, अंडर नरिशमेंट और की बात की जा रही है. सो बेसिकली यूनिसेफ इज़ द बॉडी विच अमंग दीज बॉडीज विच बेसिकली वर्क्स इन दीज डायरेक्शंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is on the City Index 2023, and you are required to tell me that how many that India has the dash highest number of female billionaires globally. अगर हम बात करते हैं टॉप पे, तो टॉप पे यूनाइटेड स्टेट्स फॉलोड बाय चाइना, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज बेसिकली द फिफ्थ हाईएस्ट number of female billionaires globally, and you can see here that India was jointly on the fifth position along with Australia and Hong Kong, and United States was on the top position with the 92 number of female billionaires. Now the next question. So guys, Colonel Geeta Rana has become the first woman to command EME unit near dash border. A very direct question guys. See the headline से ये questions बनाए गए हैं, and you can see here that exam के अंदर ऐसे questions काफ़ी expected रहते हैं, and the right answer is to this question is option D, that is China. Now the next question, and guys this question is I already told you that this particular day, that is International Women's Day, is being celebrated on 8th of March. एंड आई ऑलवेज टेल यू दैट वेयर देर इज़ अ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे देर इज़ अ थीम एज वेल. तो डेट हम कर चुके हैं कवर, तो थीम क्या है ये आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स के अंदर, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज एक्जैक्टली द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो गाइस डे सेलिब्रेट किया जाता है 8th of March को, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द थीम फॉर दिस ईयर वाज डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वालिटी. सो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन, एंड नाउ दिस इज योर टाइम टू टेल मी दैट व्हाट एक्जैक्टली योर स्कोर्स आर आउट ऑफ 50 in this particular session. And those students who are still new to our YouTube channel, guys, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel if you want to access the PDF of these particular sessions. तो हमारे जो भी YouTube के sessions हैं उनकी PDF आपको इस Telegram channel से मिल सकती है. So guys, I hope that this session was useful and fruitful to all of you. If you have liked the session, please give a comment, and you can also share the session with your aspirant friends as well, so that they can make the most out of these particular sessions. And guys, in case of any queries, you can comment them as well, and you can also share your queries on the mail at hello@edutap.co.in, and you can also call us at 8146207241. So guys, thank you for joining us. I will be back with one of the another session of top 50 MCQs next week. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.